Good morning, 8th class students. How are you all? Hope you all fine at your home. So I'm your computer teacher from California Public School. So welcome back to the video series of your chapter number 1. So in the last video we have discussed till this point, that is multitasking operating system. So from today we are going to start our multi-threading operating system. So today date is 3rd June 2020. So let's start. Multi-threading. What is threading here? Threading means parts. These operating system allow different parts of a software program to run simultaneously. That means there is only one program, software program, and it is divided into a threads. It is divided into a parts, और वो parts क्या करते हैं? They run simultaneously. Simultaneously means together. एक साथ रन करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के सारे पार्ट. दैट इज कॉल्ड योर मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द फीचर ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग कैन डिले द एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो एक की एग्जीक्यूशन डिले सारे प्रोसेस को क्या कर देती है? डिले कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू होस्ट अ गेम सर्वर on LAN. What is LAN? It's local area network, that is your internet. Your friend will utilize different part of the same game by connecting to your machine at the same time. All these resources will be utilized from your machine, which can be performance degrading factor. That means, as I told you, that they are connected with each other, or there is an example of multi-threading. सो इन दैट गेम आप और आपका दोस्त उस पर प्ले कर रहे हो. दैट मीन्स वो आपके क्या कर रहा है? आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है. दैट मीन्स अगर वो यूटिलाइज कर रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस में क्या हो रही है? डिग्रेडिंग फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है. दैट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस कैसे डिले हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रही है आपकी परफॉर्मेंस. सो दिस इज़ the examples of operating system, multi-threading operating system is Windows NT 2000, Windows XP, Windows 7, 8, 8.1, Unix, Linux. So these are the examples of the multi-threading operating system. Next is a very important operating system, that is RTOS, real-time operating system. So real-time operating system is designed to handle real-life scenarios and problems. रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए वी यूज़ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम. सच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज the processes, minimize execution time and work independently with no interdependencies. As we have discussed, in this system there is a dependence, but if we are talking about this system, so there is no independence between the processes. That means this is used for a real life scenarios and problems. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसी कैसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं? टू प्रायोरिटाइज मीन्स वी हैव अ मल्टीपल प्रोसेसेस इन द सिस्टम. टू गिव देम द नंबर, टू असाइन देम द नंबर कि किस किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे. हु विल बी द फर्स्ट टू एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट हु विल बी द सेकेंड टू एग्जीक्यूट. दैट इज़ कॉल्ड द प्रायोरिटाइज. मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जीक्यूशन टाइम को क्या करते हैं? कम कर देते हैं. मतलब you can result in a very faster pace and work independently. और काम क्या करते हैं? independently करते हैं. और अगर एक काम हम अब independently कर रहे हैं without interdependence with another processes, that means in this operating system our performance degrade, no, हमारी जो performance है वो degrade नहीं होगी. So real time operating system is used when the time span, what is time span? It's time limit or time boundary required to react to an input is rigid and time bound. जब आपको ये बताया गया हो that you have to complete your task within this time, that is your real time operating system. Even a microsecond of delay will cause the system to fail. ऐसे सिस्टम में वी आर नॉट अलाउड टू टेक
extra microsecond. अगर आप ऐसा करते हो that your system will cause to fail. आपका सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है. सो अ माइनर डिले इज नॉट एट ऑल अलाउड इन दिस RTOS. फॉर एग्जाम्पल एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स, रोबोट्स, वेपन सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे माइनर सी डिले भी आपको बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ सकता है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ operating system, real time operating system, that hard and soft. Hard means complex, strong, restrictive. That means these system guarantee that critical tasks are completed in time. If we want to perform a critical task, that means you have to choose this operating system, hard real time, जहाँ पे माइनर सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर यू. सॉफ्ट रियल टाइम, दैट मीन्स माइनर second delays can be allowed in this. So these systems are less restrictive, as these systems are hard real time are more restrictive. For example, undersea exploration, planetary rovers, and virtual reality are some of the example of hard and real time operating system. Next we have a distributed operating system. So distributed operating system runs on a set of computers that are located in a different geographical areas interconnected by a network. So let me show you one example of this. So this is the example of your distributed system. We will read this line by line. So in the first line they said distributed operating system is a set of computers. So here is a distributed operating system and we are having 4 computers, and they are the set of computers that are located in different geographical areas. Suppose these 4 computers are placed in 4 different countries. Each processor has its processor and memory. Each computer has its own processor and memory, and this PC also has its own processor and memory. Next, it controls these interconnected system and make them appear as a single computer. These are different and work independently, but as a whole they are connected and serve as a single computer. It allows all the linked machine to access data and software as they are connected to each other. What actually this arrows signifies, that means they are connected with each other. This PC is connected with this one, this PC is connected with this one, this with this. So if they are connected with each other, so it is easy to assess means use. You can use data and software of another PC as well. अब दूसरे PC क्या कर सकते हो आप, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का डेटा यूज़ कर सकता है. And the processes takes over the common network from different computer irrespective of their location on the globe. That means as they are placed in 4 different parts of a world, लेकिन फिर भी ये क्या कर सकते हैं, द प्रोसेसेस ऑफ दी सिस्टम टेक ओवर द कॉमन नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स. हम डिफरेंट कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, कॉमन नेटवर्क को असेस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर. क्लियर? सो आफ्टर दिस वी हैव another topic also, which is user interface. So user interface actually, so interface is the point where two systems meet and interact with each other. Similarly, in computing, user interface refers to a hardware software mechanism by which a user interacts with the computer to pass instructions to it. As we can say,
यूज़र एंड कंप्यूटर कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद each अदर. यूज़र कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, 1 to 1 टॉक नहीं कर सकता, ना ही कंप्यूटर यूज़र से कर सकता है. दे नीड अ इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस से कनेक्ट करेगा, इंटरफेस देन कंप्यूटर से करेगा, वाइस वर्सा. यहाँ से कंप्यूटर इंटरफेस से कनेक्ट करेगा और इंटरफेस यूज़र से कनेक्ट करेगा. सो दिस इज़ द एक्चुअल फंक्शन ऑफ अ इंटरफेस टू कनेक्ट यूज़र एंड कंप्यूटर. So the operating system of a computer act as an interface which a user gives commands or instruction to the computer and also receive messages from a computer. So operating system is also an interface. User अपनी instructions किसको देगा? Operating system को. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उसको किसको दे देगा? कंप्यूटर को दे देगा. सो विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रैक्शन बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस. नंबर 1 is CUI and number 2 is GUI. I think this is sufficient for today's period. In the next period we will try to finish this chapter. So till then, take care, bye, and have a good day.